Sabka Vishwas, our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society, and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once in a century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अडर 24/7 IAS। मेरा नाम है त्रिजा गर्ग और मेरा नाम है प्रीति चौधरी। और आज आ गया है हमारा इंटरिम बजट। इंटरिम बजट क्या होता है कि इलेक्शन से पहले जो हमारी बेसिकली फुल बजट देना अलाउड नहीं होता है, तो इलेक्शन से पहले कुछ महीने का बजट आता है जिसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की चीज़ें जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी बताने वाली हैं। तो अभी वो बता रही हैं किस तरीके से पैंडेमिक से हम निकल कर अपनी इकोनॉमी की जो है अर्थव्यवस्था हमारी स्ट्रॉन्ग हुई है। ओके, तो एक बार आप सुनते रहिए, बीच बीच में मैं आपको समझाती रहूंगी। Solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and individual through housing for all, Har Ghar Jal, electricity for all, cooking gas for all, bank accounts and financial services for all in record time. तो अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ये बता रही हैं कि कैसे समावेशी विकास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे देश के विकास के लिए, हमारी आर्थिक विकास के लिए। और इसीलिए हमारी जो सरकार है उसने काम किया है लोगों के लिए, हर घर में जैसे हर को हाउसिंग प्रोवाइड करना, हर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, हर को कुकिंग ऑयल प्रोवाइड करना। तो वो ये बता रही हैं कि समावेशी विकास कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. Minimum support prices for the produce of Annadata are periodically increased appropriately. These and the provision of basic necessities have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Social justice. Our government is working with an approach to development that is all-round, all-pervasive, and all-inclusive. Sarvangin, Sarvasparshi, or Sarvasamaveshi. It covers all castes and people at all levels. We are working to तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हंगर को भी कम करने के लिए फ्री राशन के थ्रू अंडर MSP काम किया गया है और इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है, समावेशी विकास पर फोकस किया है गवर्नमेंट ने कि हर घर तक, हर गरीब तक बेसिकली जो डेवलपमेंट है, जो हमारा विकास है वो पुअर तक पहुंचे, रिमोट एरियाज में भी पहुंचे, सब तक विकास पहुंचे। सिर्फ क्या है हमारी अपर क्लास तक ही डेवलपमेंट ना हमारा सीमित रह जाए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर फोकस गवर्नमेंट ने किया है। बिल्कुल, अगर वो इंक्लूसिव आप देखिए, अगर विकास होगा सबका तो वो हमारी आर्थिक वृद्धि में भी योगदान दे पाएंगे, यानी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी दे पाएंगे। तो ज़रूरी होता है कि सबकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं यानी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करा जाए, तभी वो आगे बढ़कर हमारी आर्थिक वृद्धि में योगदान देंगे और हमारी आर्थिक स्थिति जो है और ताकतवर और मजबूत होती चली जाएगी। विकसित भारत by 2047. For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice was mostly a political slogan. For our government,
social justice is an effective and necessary governance model. सामाजिक न्याय के बारे में बात हो रही है. The statute That is tabling 26th में. covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption, and prevents nepotism, prevents bhai bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly. अभी वो बेसिकली ये बता रही है कि हमारी जो अभी सरकार है यानी कि मोदी गवर्नमेंट ने किस तरीके से सोशल जस्टिस के लिए काम किया है, करप्शन को ख़त्म किया है, नीचे किया है, नेपोटिज्म को नीचे किया है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण जो है संसाधनों का यानी रिसोर्सेज का उसको फेयरली किया है. 10 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. The savings have helped in providing more funds for Garib Kalyan. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the third time. वो ये बता रही है कि स्ट्रीट वेंडर्स यानी सड़क पे जो एक्चुअली वेंडर्स होते हैं उनको भी क्रेडिट मिला है और किस तरीके से उनको दूसरी तीसरी बार भी मिला है. तो आप समझिए अगर फैसिलिटी मिलेगी, ऋण मिलेगा तो वो भी जो है योगदान दे पाएंगे आर्थिक वृद्धि में. तो बेसिकली पीएम स्वनिधि स्कीम की बात करी है निर्मला सीतारमन जी ने कि पीएम स्वनिधि स्कीम के दौरान कितना बेनिफिट स्ट्रीट वेंडर्स को हुआ है, कितने स्ट्रीट वेंडर्स को बेनिफिट इस स्कीम से मिला है. Janman Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind. समावेशी विकास के बारे में बात हो रही है. समावेशी विकास यानी कि चाहे हमारे विकलांग यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हो गए, हमारे जो ट्रांसजेंडर्स हो गए या ट्राइबल पीपल हो गए जिनको ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे, उन पे भी ध्यान दिया गया है ताकि वो भी उनका भी विकास हो पाए, डेवलपमेंट हो पाए और वो इंक्लूड हो पाए, यानी इसको कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट. ठीक है. और PM विश्वकर्मा योजना के बारे में भी बात हुई है कि आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन को भी कैसे सपोर्ट दिया जा रहा है. Are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. तो यहाँ पे इन्होंने बात करी है ई नाम की, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की, जो कि हम एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी का आपका पार्ट है. ई नाम क्या है? ई नाम कि बेसिकली मार्केट्स को इंटीग्रेट कर देना डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से. तो ई नाम से मोर देन 1 लाख फार्मर्स को जो है आपका बेनिफिट हुआ है और इसका मतलब है कि डिजिटाइजेशन पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है. तो डिजिटाइजेशन का ही एक एग्जाम्पल है ई नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट. The Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020 is ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth. अब इसमें बात हो रही है कि किस तरीके से शिक्षा जो है उसको भी बढ़ाया जा रहा है, शिक्षित करा जा रहा है हमारे युवाओं को, क्योंकि आपको पता है हमारे जो देश है उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड ऐसा है कि युवा जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत नंबर में है. और अगर हम उनको शिक्षित करेंगे, उनकी स्किल्स, उनके कौशल को बढ़ाएंगे तो उनका योगदान ज़्यादा बढ़ पाएगा हमारी आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए. PM Mudra Yojana
has sanctioned 43 crore loans aggregating to 22.5 lakh crores of rupees for entrepreneurial aspirations of our youth. Besides that, Fund of Funds, Startup India, and Startup Credit Guarantee schemes are assisting our youth. They are also becoming Rozgar Data. The country is proud of our youth scaling new heights in sports. The highest ever medal tally in Asian Games and Asian Para Games in 2023 reflects a high confidence level. Chess prodigy and our #1 ranked player Pragyananda put up a stiff fight against the reigning world champion Magnus Carlsen in 2023. Today, India has over 80 chess grandmasters compared to little over 20 in 2010. Momentum for Nari Shakti. The empowerment of women through entrepreneurship, ease of living, and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development, and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development, and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric, and prompt, trust-based administration with citizen-first and minimum government, maximum governance approach. The impact of all-round development is discernible in all sectors. There is macroeconomic stability, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well. People are living better and earning better, with even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. People are getting empowered, equipped, and enabled to pursue their aspirations. There is effective and timely delivery of programs and of large projects. Economic management. The multi-pronged economic management over the past 10 years has complemented people-centric, inclusive development. Following are some of the major elements. 1. All forms of infrastructure, physical, digital, or social, are being built in record time. Number 2, all parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number 3, digital public infrastructure, a new factor of production in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy. Number 4, goods and services tax
has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number 5, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit, and investments more efficient. Number 6, GIFT, IFSC, and the Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Number 7, proactive inflation management has helped keep inflation within the policy band. Now, the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically, global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains, and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth, and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel, and finances for the world, while India successfully navigated its way. सो बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल टेंशन, आपको पता है कितने वॉर्स हो रहे थे, हाई इन्फ्लेशन, हाई मुद्रास्फीति थी हमारे पूरे वैश्विक स्तर पे अगर बात करें, ठीक है, डेट बहुत ज़्यादा था, बोरोइंग यानी कि बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद ग्रोथ यानी वृद्धि जो थी, आर्थिक वृद्धि, वो हमारे वैश्विक स्तर पे लो थी, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो देश है उसको निकल के आगे बढ़ गया है. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India, Middle East, Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil. Unquote. Vision for Vikasit Bharat. Our vision for Vikasit Bharat is that of prosperous Bharat in harmony with nature, with modern infrastructure, and providing opportunities for all citizens and all regions to reach their potential. With confidence arising from strong and exemplary track record of performance and progress, earning Sabka Vishwas, the next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments to realize the dream of developed India by 2047. बात हो रही है विकसित भारत की, यानी कि डेवलप्ड इंडिया की. किस तरीके से पिछले जो हमारे नेक्स्ट 5 इयर्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, किस तरीके से सबकी डेवलपमेंट करेंगे ताकि हम 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए, क्योंकि अभी हम डेवलपिंग कंट्री है. ओके. The trinity of demography, democracy, and diversity, backed by Sabka Prayas, has the potential to fulfill aspirations of every Indian. As Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation mentioned, I quote, "There is no dearth of opportunities, as many opportunities as we want. The country is capable of creating more opportunities. Sky is the limit." Unquote. Strategy for Amritkal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all,
help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally. Orienting the regulatory environment to facilitate their growth will be an important element of this policy mix. Aligning with the Panchamrit goals, our government will facilitate sustaining high and more resource-efficient economic growth. This will work towards energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. For meeting the investment needs, our government will prepare the financial sector in terms of size, capacity, skills, and regulatory framework. Aspirational Districts Program. Government stands ready to assist the states in faster development of aspirational districts and blocks, including generation of ample economic opportunities. Development of the East. Our government will pay utmost attention to make the eastern region and its people a powerful driver of India's growth. Yes. PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising increase in the number of families. तो यहाँ पे बेसिकली बात हुई है कि ट्रिनिटी ऑफ डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी एंड डेमोग्राफी भारत को पहुंचाएगा उसकी डेस्टिनेशन तक. क्या है डेस्टिनेशन? कि 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री इंडिया का टारगेट है. अभी भारत डेवलपिंग कंट्री है, जैसे कि त्रिज्या मैम ने बोला, लेकिन डेवलप्ड कंट्री बनना भारत का टारगेट है 2047 तक. उसके लिए पंचामृत टारगेट भी जो कि लॉन्च किया था इंडिया ने, वो भारत को हेल्प करने वाला है एक डेवलप्ड कंट्री बनने में. फिर बात की गई है पीएम आवास योजना की. पीएम आवास योजना में कितने घर बनाए गए हैं और अभी नेक्स्ट टारगेट 5 सालों में क्या टारगेट गवर्नमेंट का रहने वाला. तो पीएम आवास योजना के बारे में उन्होंने ये बोला है, कोविड के वजह से जो डिस्ट्रप्शंस आए थे, यानी पैंडेमिक की वजह से जो डिस्ट्रप्शंस आए थे, उसके बाद भी 3 लाख करोड़ हाउसेज जो है वो बना दिए गए हैं. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation, and maintenance. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies.
unquote, to buy or build their own houses. Medical colleges. Several youth are ambitious to get qualified as doctors. They aim to serve our people through improved healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. तो ये बता रही हैं कि मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो और ज़्यादा खोले जाएंगे क्योंकि हमारी जो युवा है, हमारी जो यूथ है, वो बहुत डॉक्टर्स बनना चाहती है और हम एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो हमारे अभी के जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, जो मेडिकल सेंटर्स हैं, उन्हीं को यूज़ करके वो कॉलेजेस को बनाएंगे और इसके लिए कमिटी भी सेट करी जाएगी. Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. उन्होंने ये बोला है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए जो 9 से 14 साल की जो बेसिकली गर्ल्स हैं उनके लिए वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस करे जाएंगे. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care and development. The newly designed U-Win platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. माओ और बच्चों की देखभाल के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके पोषण के लिए नई नई चीज़ें आएंगी, नए नए इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे और वो एक यूनिवर्सल इनिशिएटिव लिया जाएगा. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. Agriculture and food processing. The efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers' incomes will be stepped up. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri formalization of micro food processing enterprises Yojana has assisted 2.4 lakh SHGs and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and income. कृषि क्षेत्र की बात हो रही है. कृषि क्षेत्र ने किस तरीके से ग्रो किया है? Faster growth of the sector. Our government will further promote private and public investment in post-harvest activities, including aggregation, modern storage, efficient supply chains, primary and secondary processing and marketing and branding. अब बात ये हो रही है कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप करके जब कटाई हो जाती है तो उसके बाद उसका जो फसल होती है वो हमें स्टोर करनी होती है. तो किस तरीके से हम वो नई नई टेक्निक्स लेके आएंगे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ हम बेहतर करेंगे अपने इस वितरण को, डिस्ट्रीब्यूशन को भी. After the successful adoption of nano urea, application of nano DAP on various crops will be expanded in all agroclimatic zones. Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan. Building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean, and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition, and crop insurance. Dairy development. A comprehensive ऑयल सीड्स के डेवलपमेंट के बारे में बात करी गई है. अभी
will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer with वो बता रही है कि हमारा भारत India is the world's वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का, largest milk producer, but with low productivity of milk animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds for dairy processing and animal husbandry. Matsya Sampada. It was our government which set up a separate department for fisheries, realizing the importance of assisting fishermen, मछुआरों को असिस्ट करने की बात हो रही है. both inland and aquaculture production. Seafood exports since 2013-14 has also doubled. Implementation of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana will be stepped up to 1. Enhance aquaculture productivity from existing 3 to 5 tons per hectare. तो उन्होंने अभी ये बताया है कि जो सी फूड है उसका जो एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात जो है वो डबल हो चुका है. तो हमारी जो ऑलरेडी एक स्कीम है संपदा योजना, मत्स्य संपदा योजना, तो वो भी उसको स्टेप अप करा जाएगा. उसी में एक नए एडिशंस लेके आए जाएंगे ताकि हम उसको और बड़ा कर सकें. 2. Double exports to 1 lakh crore rupees, and 3. Generate 55 lakh employment opportunities in the near future. तो आप खुद सोचो कि अगर किसी चीज़ को आगे और स्टेप अप करा जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन यानी उत्पादन भी बढ़ेगा, उसके साथ साथ रोजगार भी हम बढ़ाएंगे, तो ये कितनी अच्छी चीज़ है. Integrated aqua parks will also be set up. Lakpati Didi. 83 lakh SHGs. 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker said, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. Technological changes, new age technologies, and data are changing the lives of people and businesses. They are also enabling new economic opportunities and facilitating provision of high-quality services at affordable prices for all, including those at the bottom of the pyramid. Opportunities for India at the global level are expanding. India is showing solutions through innovation and entrepreneurship of its people. Research and innovation for catalyzing growth, employment, and development. Prime Minister Lal Bahadur Shastri gave the slogan of Jai Jawan, Jai Kisan. Prime Minister Vajpayee, Atal Bihari Vajpayee ji, made that Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan. Prime Minister Modi has furthered that to Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, and Jai Anusandhan, as innovation is the foundation of development. For our tech-savvy youth, this will be a golden era. A corpus of 1 lakh crore rupees will be established with 50-year interest-free loan provided. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low and or nil. I repeat that sentence. The corpus will provide long-term financing
or refinancing with long tenors and low or nil interest rates. This will encourage the private sector to scale up research and innovation significantly in sunrise domains. वो ये कह रही हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो ऋण के फॉर्म में दिए जाएंगे ताकि इनोवेशन और रिसर्च जो है वो हमारे देश में बढ़े, क्योंकि इनोवेशन से ही डेवलपमेंट यानी विकास आ सकता है, आर्थिक विकास जो है वो बढ़ सकता है। तो वो यही बता रही हैं। और ये जो लोन, ये जो ऋण दिया जाएगा ना, या तो निल, या तो बिल्कुल भी ब्याज दर पे नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल ब्याज दर खत्म कर दिया जाएगा, या बहुत ही कम ब्याज दर लिया जाएगा। We need to have programs that combine the powers of our youth and technology. A new scheme will be launched for strengthening deep tech technologies for defense purposes. डिफेंस के लिए भी Atmanirbharta. डिफेंस के लिए भी टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, प्रौद्योगिकी ली जाएगी। Building on the massive tripling of the capital expenditure outlay in the past 4 years, resulting in huge multiplier impact on economic growth and employment creation, the outlay for the next year is being increased by 11.1% to 11,11,111 crore rupees. अब देखो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रही है कि अगर जो सरकार जो स्पेंडिंग करती है उससे क्या होता है, जो सरकार जो खर्चा करती है, जो व्यय करती है, उससे रोज़गार भी बढ़ता है। ठीक है, और रोज़गार बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा भी आएगा, तो कंजम्पशन भी एक तरीके से बढ़ता है, लोगों की जो स्थिति है वो भी बेहतर हो पाती है, वो भी योगदान जो है बेहतर दे पाते हैं। तो सरकार उसके लिए खर्चा करती है। तो सरकार अब ये बता रही है 11.1% से जो है खर्चा बढ़ाया जाएगा। This would be 3.4% of our GDP. Railways. 3 major economic railway corridor programs will be implemented. These are energy, mineral, and cement corridor. Number 2, port connectivity corridors. And number 3, high traffic density corridors. The projects have been identified under the PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity. They will improve logistics efficiency and reduce cost. The resultant decongestion. तो वो अब ये बता रही है कि किस तरीके से नए नए कॉरिडोर्स आएंगे, चाहे पोर्ट की बात हो रही हो, चाहे हाईवेज की बात हो रही हो, चाहे रेलवेज की बात हो रही हो, तो उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारा सामान, उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। Of the high traffic corridors और also help पीएम गति शक्ति के अंडर वो कॉरिडोर्स, वो जगहें जो हैं वो डिसाइड करी गई हैं, निकाली गई हैं। operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these 3 economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistic costs. $40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards. रेलवेज को भी जो है एक तरीके से अपग्रेड करा जा रहा है कि जो हमारी बोगीज़ हैं, 40,000 बोगीज़ है रेलवेज की, उसको वंदे भारत के स्टैंडर्ड तक पहुंचाया जाएगा। और आपको पता ही है कि ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, ये हमारे जीडीपी को भी जो है बढ़ाएगा और आगे करेगा। Safety, convenience and comfort of passengers. Aviation sector. एविएशन यानी कि प्लेन्स वगैरह की बात हो रही है। In the past 10 years, number of airports have doubled to 149. एयरपोर्ट जो है डबल हो गए हैं। Rollout of air connectivity to Tier 2 and Tier 3 cities under Udan scheme has been widespread. 517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. Indian नए रूट्स बनाए गए हैं, कनेक्टिविटी बढ़ गई है इससे। carriers have proactively placed orders for over 1,000 new aircrafts. Expansion of existing airports and development of new airports will continue expeditiously.
Metro and Namo Bharat. We have a fast expanding middle class and rapid urbanization is taking place. Metro rail and Namo Bharat can be the catalyst for the required urban transformation. Expansion of these systems will be supported in large cities, focusing on transit-oriented development. Green energy. Towards meeting our commitment for net zero by 2070, the following measures will be taken. Viability gap funding will be provided for harnessing offshore wind energy, potential for initial capacity of 1 gigawatt. Coal gasification and liquefaction capacity of 100 metric tons will be set up. आपको पता ही है कि नेट जीरो हमें प्राप्त करना है 2070 तक. नेट जीरो का मतलब ये होता है जितने कार्बन एमिशंस जो है हम कर रहे हैं अपनी जितने भी प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज की वजह से, उतना हमें कम भी करना है अपने एटमॉस्फेयर से. तो नेट जीरो होता है बैलेंस करना, एक तरीके से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बैलेंस हो जाए. तो उसके लिए बताया जा रहा है तो किस तरीके से ग्रीन एनर्जी पे काम होगा, चाहे विंड पावर हो गई, चाहे सोलर पैनल्स हो गए, तो ये इनके बारे में वो बता रही हैं. 2030. This will also help in reducing imports of natural gas, methanol, and ammonia. Phased mandatory blending of compressed biogas in compressed natural gas for transport and piped natural gas for domestic purposes will be mandated. Financial assistance will be provided for procurement of biomass aggregation machinery to support collection. Electric vehicle ecosystem. Our government will expand this and strengthen the e-vehicle ecosystem by supporting manufacturing and charging infrastructure. Greater adoption of e-buses for public transport networks will be. वो ये बता रही है कि अगेन हमारे एनवायरनमेंट के लिए ई व्हीकल्स के लिए हमारी जो सरकार है वो भी योगदान देगी. तो जैसे चार्जिंग स्टेशंस वगैरह होते हैं, तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में या मैन्युफैक्चरिंग जो ये सब चीज़ें बना रहे हैं, जो ये कार्स बनाते हैं, स्कूटर्स या बसेस वगैरह हो गए, तो वो सब जो है उसके लिए भी योगदान हमारी सरकार देगी ताकि ये और ज़्यादा हमारे देश में आ सके, जैसे कि ई बसेस लोगों के लिए. Encouraged through payment security mechanism. Biomanufacturing and biofoundry. For promoting green growth, a new scheme of biomanufacturing and biofoundry will be launched. This will provide environment-friendly alternatives such as biodegradable polymers, bioplastics, biopharmaceuticals, and bioagri inputs. This scheme will also help in transforming today's consumptive manufacturing paradigm to the one based on regenerative principles. Blue Economy 2.0. For promoting climate resilient activities for Blue Economy 2.0, a scheme for restoration and adaptation measures and coastal aquaculture and mariculture with integrated and multi-sectoral approach will be launched. Comprehensive development of tourist centers. The success of organizing G20 meetings in 60 places presented diversity of India to global audience. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. तो वो ये बता रही हैं कि G20 जैसे कि आपको पता है हमने होस्ट किया था इंडिया में एंड 60 मीटिंग्स हुई थी G20 की. उससे क्या हुआ, ग्लोबल लोगों को हमारे कल्चर के बारे में, हमारे हेरिटेज के बारे में, हमारी इकोनॉमी के बारे में पता चला. और आपको पता ही है, अगर उनको पता चलेगा कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, हमारी जगह कैसी है, अर्थव्यवस्थाएं कैसी हैं अलग अलग, तो वो भी निवेश करेंगे बिजनेसेस के लिए. हम एक अट्रैक्टिव जो है डेस्टिनेशन बन जाते हैं. Middle class also now aspires to travel and explore. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale.
ये बोला जा रहा है कि हमारे जो राज्य हैं, जो हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं, वो काम करें इस चीज़ पर कि हमारे अलग अलग स्टेट्स टूरिस्ट सेंटर्स बन जाए और हम उसको ग्लोबल लेवल तक पहुंचा पाएं. For rating of the centers based on quality of facilities and services will be established. Long-term interest-free loans will be provided to states for financing such development on matching basis. और इसके लिए ही स्टेट्स को लॉन्ग टर्म लोन्स मिलेंगे सरकार की तरफ से, ताकि वो ये डेवलपमेंट, ये विकास अपने राज्यों में कर पाएं. To address the emerging fervor for domestic tourism, Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure, and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. तो इस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, पोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक टूरिज्म जो है, यानी हमारे देश के लोग हमारे राज्यों में ही घूमने की जो उनकी इच्छा है वो बढ़ रही है, तो उसी के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमारी सरकार जो है वो योगदान देगी. This will help in generating employment also. और इससे रोजगार भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम एक टूरिस्ट सेंटर्स बनाएंगे तो वहाँ पे आपको पता है लोकल व्यापार जो है वो बढ़ेगा. लोकल व्यापार बढ़ेगा तो एक तरीके से रोजगार भी बढ़ेगा और बेरोजगारी दर जो है वो भी नीचे आएगा. तो एक तरीके से सरकार सरकार एक्सपेंडिचर कर क्या कर रही है, व्यापार भी बढ़ा रही है, उत्पादन भी बढ़ा रही है, उसके साथ साथ रोजगार भी बढ़ा रही है. The FDI inflow during 2014 to 23 was $596 billion, marking a golden era. That is twice the inflow during 2005 to 14. For encouraging sustained foreign investment, we are negotiating bilateral investment treaties with our foreign partners in the spirit of First Develop India. FDI is First Develop India. Reforms in the states for Vikasit Bharat. Many growth and development enabling reforms are needed in the states for realizing the vision of Vikasit Bharat. A provision of 75,000 crore rupees as 50-year interest-free loan is proposed this year to support those milestone-linked reforms by the state governments. Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes. The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of Vikasit Bharat. एक नई हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी जिसमें आपको पता है पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी ज़्यादा है, बढ़ रही है, तो किस तरीके से हम सोसाइटी की नीड्स वगैरह पूरी कर सकते हैं, वही सिफारिशें ये कमेटी देगी. उसके साथ साथ ये बात भी हो रही है, 75,000 करोड़ रुपीज़ का प्रोविज़न दिया गया है कि ये जो है नेक्स्ट 50 ईयर्स तक, जो हमें 2070 तक एक विकसित भारत बनना है, तो नेक्स्ट 50 ईयर्स तक कम इंटरेस्ट पे राज्य को दिया जाएगा ताकि वो डेवलपमेंट कर पाए, विकास कर पाए. Our government stands committed to strengthening and expanding the economy with high growth and to create conditions for people to realize their aspirations. Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation in the 75th year of our republic said, and I quote, "We commit ourselves to national development with new inspirations, new consciousness, new resolutions as the country opens up immense possibilities and opportunities. It is our kartavya kaal." Unquote. Every challenge of the pre-2014 era was overcome through our economic management and our governance. These have placed the country on a resolute path of sustained high growth. This has been possible through right policies,
true intent ओके, गुड क्वेश्चन सैम। बेसिकली क्या होता है, अभी ये जो इंटरिम बजट है, वैसे भी ये कुछ महीनों का ही है। फुल बजट जो है वो आपका आएगा इलेक्शन के बाद, यानी कि जुलाई के राउंड में आ जाएगा आपका फुल बजट। अब वो 50 साल नेक्स्ट 50 ईयर्स की इसलिए बात कर रही हैं क्योंकि एक बार में तो नहीं हो सकता ना पूरा वो डेवलपमेंट। हम धीरे धीरे हर साल जो है योगदान करेंगे, उस तरफ बढ़ेंगे आगे, तभी तो हम वो 50 साल वाला एम जो विकसित भारत का है वो हम पा पाएंगे। तो इसीलिए वो छोटे छोटे स्टेप्स के बारे में बात होती है, किस तरीके से हम उस दिशा की तरफ बढ़ सकते हैं। intentions and appropriate decisions. In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. Revised estimates of 2023-24. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 27.56 lakh crores of rupees, of which the tax receipts are 23.24 lakh crore rupees. The revised estimate of total expenditure is 44.90 lakh crore rupees. The revenue receipts at 30.03 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP, improving on the budget estimate, notwithstanding moderation in the nominal growth estimates. Budget estimates for 2024-25. Coming to the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80 and 47.66 lakh crore. अब वो बता रही हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स अदर देन बोरोइंग, यानी बोरोइंग के अलावा जो रिसीट्स आती है, हमारे रेवेन्यू जो आता है हमारी सरकार के पास, तो वो कितना होगा अगले साल के लिए एस्टिमेट हो रहा है Rupees respectively. The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation as announced in my budget speech of 2021-22 to reduce fiscal deficit below 4.5% by 25-26. तो बात हो रही है फिस्कल डेफिसिट जो है उसको कम करने का 25-26 तक 4.5% के नीचे लाने की बात हो रही है, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है रेवेन्यू से। The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. 5.1% ऑफ जीडीपी एस्टिमेट करा गया है, इसको हमें नीचे लेके आना है 25-26 तक 4.5% तक। So the gross and net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.13 lakh crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector. अब वो ये बोल रहे हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी हमारा आगे बढ़ रहा है, तो इसके लिए हमारी सरकार कम बोरो करेगी और ज़्यादा पैसा बचेगा प्राइवेट यानी निजी व्यापारियों को देने के लिए, प्राइवेट निवेश के लिए। ओके एवरीवन, अभी हमारा बजट जो है ये चलता रहेगा, लेकिन हमारी अभी दूसरी क्लास है, तो अब मैं इसका एक पूरा समरी हाइलाइट्स जो है आपके लिए लेके आऊँगी। ये सेशन जो है मैं लेके आऊँगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे इंटरिम है लेकिन प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं पूरा सेशन इस पर तैयार करूँगी और आपके लिए वो सेशन ज़रूर लेके आऊँगी। भूलिएगा मत, 3 बजे आज हम पढ़ने वाले हैं रमेश सिंह का लेक्चर 11, तो जुड़ना मत भूलिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है त्रिजा गर्ग। थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। कमेंट भी करके बताइएगा कैसा लगा आपको ये सेशन। बाय एवरीवन।